Yes, so you saw that at the beginning she compromised, she was ready to go to the local school, but she decided to fight the system. इस सिस्टम से लड़ने के लिए उसने अपना खुद क्वाइट रास्ता अपनाया, ऐसा कोई रास्ता अपनाया जो अपने तरीके से लड़ सके. when the right moment arrived, जब सही समय आएगा तो वो कोई स्टेप उठाएगी. and the right moment came when she turned 16. When she became 16-year-old, the right turn, right situation came. At 16, most of the girls in her village used to get married. This is the custom of Haryana that at the age of 16 or 17, most of the girls are forced to get married. I don't say कि उनको वो खुद शादी कर लेती हैं या उनका मन होता है शादी करने का. They are forced to by their parents, by the society, by the people around them to get married. So at the age of 16, other girls of that village were getting married. Santosh was also under pressure from the parents to do the same. उसके ऊपर भी प्रेशर बनाया गया कि वो भी मैरिज कर ले when she was only 16 years old. A marriage at as early age, that was the last thing on her mind. Last thing means it was the least important thing. At such age, early age, she didn't want to marry. She didn't want to marry. She was against it, and it was not an important thing for her. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. Here, what you can see, that she was very serious, she was damn serious about the proper education of girls, and she threatened her. Threatened का मतलब एक तरह से धमकी दी अपने माता पिता को that she will never marry, अपनी पूरी लाइफ शादी नहीं करेगी if she is not given proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi, and she took a step. She enrolled herself in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. But parents were not ready to pay for her fee, pay for her education. So she very politely said, okay, no problem. If you don't want to give me money, it's okay. I will manage the things. I will do some part-time job and arrange my fee for my further studies. Her parents then agreed to pay for the education, pay for her education. So what was the result of her resistance? उसने जब ये बात सारी चीजें की बताई तो उसके माता पिता उसके लिए तैयार हो गए. दे सेड ओके, ये तो मानने वाली है नहीं, और अब उन्होंने कहा कि ओके, वी विल पे फॉर योर education. So let's move to the next paragraph. Fifth, wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. Wishing always to study a bit more means she was always always ready to study more and more. सब कुछ ज़्यादा ही पढ़ना चाहती थी, उसकी इच्छा थी कि उसको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं. एंड हिज फादर ऑल्सो गेटिंग यूज टू का मतलब इसके हैबिचुअल हो चुके थे धीरे धीरे. टू हर अर्ज मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर. उसके स्ट्रॉन्ग डिजायर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन के वो आदी हो चुके थे, हैबिचुअल हो चुके थे फॉर मोर एजुकेशन. संतोष passed the high school examination and went to Jaipur. After passing 10th standard from Delhi, she went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hotel. This is the place, Jaipur. She joined Maharani College in Jaipur and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba hostel faced the Arauli hills, means just in front of Kasturba hostel there was Arauli hill. आपको पता है कि राजस्थान में अरावली
हिल्स हैं, एक पर्वत श्रृंखला है वहां पर, एंड इट वॉज जस्ट अपोजिट टू हर हॉस्टल, कस्तूरबा हॉस्टल. आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल. वो कहती है कि मैं अक्सर अपने रूम से कस्तूरबा हॉस्टल के से देखा करती थी कि गांव के लोग उस पहाड़ी पर चढ़ते थे और अचानक कुछ समय के बाद वो गायब हो जाते थे. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ एंड शी डिसाइडेड दैट शी विल check it out, means she will find out the truth, that why exactly it happens that she watch them, they are climbing the hills and they disappear. I found nobody except a few mountaineers. Mountaineers means those who climb the mountains. और उसने कहा कि वो कहती है कि जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ माउंटेनियर्स के अलावा और कोई नहीं था. आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मीन्स शी अर्ज्ड देम टू ज्वाइन देम. टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग. दे affirmative means positive reply. When she asked that if she could join them in climbing hills, the mountaineers said yes. They gave her positive response and motivated her to take to climbing. Then there was no looking back for this determined young girl. उसके बाद तो इस डिटरमाइंड यंग गर्ल को, इस लड़की को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं थी. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. मीन्स उसने एक पैसे जमा किए, पैसे सेव किए और उसने अपना एडमिशन कहां पे लिया? उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है माउंटेनियर्स को, वहां पर एडमिशन लिया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल. मीन्स यू सेज दैट हर सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. ये लेट हो गया उसका सेमेस्टर, और वो कब खत्म हुआ? जो अप्रैल में खत्म होना था वो कब खत्म हुआ? 19th मई को. And I was supposed to be in Uttarakashi on the 21st, and on 21st she was to be there in Uttarakashi, 21st May. So I did not go back home. Instead I headed straight for the training. She did not return back to Rewari. She went straight back to Uttarakashi for her mountaineering training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled in Uttarakashi. Means to say, she says that she wrote a letter, apology letter. Sorry बोलते हुए एक लेटर उसे फादर को लिखना पड़ा, because without his permission she got admission in Uttarakashi. For that she wrote a letter saying sorry that I could not ask you. Thereafter Santosh went on an expedition every year. Expedition का मतलब होता है ऐसी यात्राएं जिसमें पहाड़ों को चढ़ा जाता है, पहाड़ों पर चढ़ाई की जाती है. Her climbing skills matured rapidly. Means whatever she was learning, her climbing skills, जो उसकी स्किल्स थी, जो चीजें वो सीख रही थी, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गई, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से वो अच्छी होती जा रही थी. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड. हेयर रिमार्केबल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यू कैन से उत्कृष्ट टाइप का, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस उसने डेवलप किया. रेजिस्टेंस yes, resistance means to secure power to endure without falling ill. मतलब अपने आप को बचाते हुए कि वो जल्दी बीमार ना पड़े, ऐसी उसने अपने अंदर चीजें डेवलप